How are you? Just a second. I'll change the settings. Now you can switch on your audio and Good video. afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. चलो कैमरा सबके सब ऑन कर लो फटाफट से. Everyone switch on your camera. Switch on your camera, everyone. Okay. Now let us start with the session, and as discussed last time, what we will be doing is we'll go ahead with the nucleus part which was pending. ठीक है? But उसके पहले we will go across with viva. ठीक है students? viva करेंगे उसके पहले थोड़ा सा तो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको. लेट मी सी कि आपको कितने आंसर्स आते हैं एंड देन विल गो इनटू न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है? Okay, this is the part that we are going to start today. We'll discuss nucleus, parts of nucleus, everything we will study about nucleus. And then chromosomes देखेंगे, types of chromosomes देखेंगे, which you have done in your grade 10 also. And we will reach at par with other students. जहाँ बाकी लोग सब के सब हमने cover किए थे, वहाँ तक आज अपन पहुँच जाएंगे. And but before that, we will start with viva. Or else what I'll do is I'll complete with nucleus and chromosomes part, and then let us come back to viva. ठीक है? We can go in that pattern also. Okay, so let's start with nucleus first. So nucleus, as discussed students, nucleus क्या होता है? If I see, देखो सबसे पहला basis क्या है? What is the basis of classifying cells into eukaryotes and prokaryotes? What is the basis of classifying cells into eukaryotes and prokaryotes is that eukaryotes have a well-defined nuclear membrane. Correct? Eukaryotes have a well-defined nuclear membrane. Palak, Adipurav, Mahi, Jenny, everyone has to switch on their camera. Vari Solanki, Zohair, Sakshi, Devanshi, Shubham, Priyanka Sankhe, Shreya Sangvi, Mansi Chalwadi. Yes. So can I please keep my video off as my Zoom is getting crashed? Okay, no problem, Zohair. ठीक है. What about others? Palak, Ayush, Aryan. सबको camera on करना है students. It is compulsory. Keep your camera on. Keep your camera on quickly. Srushti Panchal. Okay, good. Arpita. Arpita. Ashna. Swati, Hem, Devsha, Janvi, Sakshi, Shreya Sangvi, Priyanka Sankhe, Alfia Ansari. All of you will have to keep your camera on, students. Keep your camera on, please. कैमरा ऑन करना है आपको. See, if you do not keep your camera on, I will have to remove you from the meeting. That is the only option I have. Okay, so do not force. Sir, there is a network issue. That's why can I keep my camera off? Okay, no problem. Unless there is an exception, students, please keep your camera on. ठीक है, चलो start करते हैं. So, what is the basis of classifying cells into prokaryotes and eukaryotes? Very simple basis of differentiating them is if I have a cell, suppose this is eukaryotic cell, okay? This is eukaryotic cell. So in eukaryotic cell, I can see a proper nucleus, students. Proper nucleus I can see in a eukaryotic cell, okay? Confirm it? Nuclear membrane I can properly make out a distinctive nuclear membrane. But when I speak about prokaryotic cell, students, when I speak about prokaryotic cell, there is no well-defined nuclear membrane. There is no well-defined nuclear membrane. Therefore, now question kahan pe aata hai? We will go back to eukaryotic cell. What is the function of nucleus? What is the function of nucleus? Nucleus contains genetic material, correct students? कोई बोलता है डीएनए, कोई बोलता है क्रोमोसोम. अपने समझता नहीं है डीएनए की क्रोमोसोम में क्या है, बट बोल दिया डीएनए है, कोई बोलता है क्रोमोसोम है उसके अंदर. सो अपन वो भी आज समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, डीएनए होता है कि क्रोमोसोम होता है कि दोनों होते हैं कि कोई एक होता है कि क्या होता है. सो
Right now I'll just say कि nucleus contains genetic material. Okay, so let me indicate this genetic material with the help of this blue line. Okay, so ऐसा blue जो आपको दिख रहा है eukaryotic cell में, therefore this is a eukaryotic cell where I can see a defined nucleus containing genetic material. But in case of prokaryotic cell, students, in case of prokaryotic cell, I cannot see a defined nucleus. I cannot see a defined nucleus. Therefore, I can expect the genetic material to be spread across the cytoplasm of the cell. साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड रहेगा. कौन डिस्पर्स्ड रहेगा? जेनेटिक मटेरियल. इज दैट क्लियर? मुस्कान क्लियर है? यस मुस्कान. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. सो सिंपल डेफिनेशन ये हमने क्लास 10 में भी किया है, ये सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. Eukaryotic cell have a well-defined nuclear membrane inside which I can imagine genetic material to be present. But in prokaryotes, because properly distinctive nuclear membrane is not present, hence genetic material would be lying in the cytoplasm. Okay, now let us zoom a bit into eukaryotic cell ka nucleus. Let us see nucleus में क्या क्या होता है. Okay, students, let us see nucleus में क्या क्या होता है. चलो. So yes, over here on your screen you can see students एक एक करके define करते हैं. ठीक है, all of you focus over here please. All of you focus over here please. Give me some answers. If I say that inside a cell, students, the area inside cell membrane students, this area over here check करो. ये जो yellow zone I am making, this region is known as, this region inside the cell is known as Cytoplasm. cytoplasm. Very good. This region inside the cell is known as cytoplasm. Cyto indicates cell and cytoplasm means region inside the cell. So if I have to define this region over here, students, ये देखो, this region over here which is inside the nucleus. Inside the cell you said cytoplasm. Inside the nucleus you'll say क्या टर्म बोलेंगे Nucleoplasm. students? Nucleoplasm is very simple answer. Nucleoplasm, is this understood? So I have Yes, cytoplasm, sir. I have nucleoplasm. I have cytoplasm, I have nucleoplasm. Next concept. Now, just around cytoplasm, I can expect ki there is plasma membrane. Check students, this is plasma membrane, correct? This is plasma membrane around cytoplasm. Now let me take you into nucleus. So can I say nucleoplasm is also surrounded by nuclear membrane? Students, check karo, nuclear membrane check karo. Can I say that? So if, Yes, if I sir. if I draw in this pattern, ye dekho, nuclear membrane, I'll have two nuclear membranes around the nucleus. Nucleus has two membranes. It is double membrane structure, two membranes. And the region between the two membranes of nucleus, region between two membranes of nucleus is known as because it is around nucleus. Perinucleus. Around, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. सो अराउंड के लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं? अराउंड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? अराउंड के लिए अपन क्या Peri. प्रीफिक्स यूज करते हैं? पेरी. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड. पेरी करेक्ट आंसर है. पेरी इज फॉर अराउंड nucleus, so I'll say perinuclear space. Perinuclear space, simple बात है. Perinuclear space, is this understood students? Is this understood? And when we were Yes. doing endoplasmic reticulum last lecture में क्या करते हैं हम? Endoplasmic reticulum. If you remember, if you can recollect, endoplasmic reticulum was connected with nuclear membrane. याद आ रहा है हमको? याद आ रहा है students? Endoplasmic Yes, sir. reticulum was connected with nuclear membrane. So I will say that perinuclear space, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. Perinuclear space is continuous with the lumen of endoplasmic reticulum. It is continuous with the lumen of endoplasmic reticulum. ठीक है, अगर मुझे नहीं समझ रहा है तो I'll go back to this term over here. ये देखो, यहाँ दिख रहा है आपको? ये देखो students, perinuclear space is continuous with the lumen.
lumen of endoplasmic reticulum. It is continuous with the lumen of endoplasmic. Lumen मतलब क्या? ये देखो ऐसा कुछ है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये रहा मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सपोज ये देखो, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ओके, और यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ से ऐसे शुरू हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस स्पेस इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम. देखो सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है, दिस रीजन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो ये रीजन, ये कनेक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दिस इज कनेक्शन बिटवीन देम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस के बीच में, दिस इज कंटिन्यूअस रीजन. एंड दिस इज वेयर mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस कम्स इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समझ में आई बात? सो अगर मैं बुशरा को पूछता हूँ, बुशरा कैन आई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इंटरनल स्पेस है इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्पेस, शी विल से यस सर, कंटिन्यूअस है, करेक्ट है. सो जो भी चीजें न्यूक्लियस के बाहर निकलेगी, ये देखो स्टूडेंट्स, मेरा लेजर चेक करो, लेजर, ये देखो, ये सपोज mRNA है, कहाँ बन गया? इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. दिस mRNA विल कम आउट ऑफ न्यूक्लियस. ये कहाँ आ गए स्टूडेंट्स? अपन चेक करो. Where are we right now? We are into the perinuclear Perinuclear space. space. Perinuclear space, right answer. Perinuclear space. And यहाँ से now tell me where am I? कहाँ हूँ मैं? Lumen of endoplasmic. Very good. Lumen of endoplasmic reticulum. Lumen of endoplasmic reticulum. Is this understood, students? Is this understood? Anyone has Yes, any sir. doubt? Please tell me. किसी को कुछ भी Sir, डाउट then है? what is nuclear envelope? Okay, nuclear envelope में I'll include both the nuclear membrane as well as perinuclear space. Understood? समझ में Okay, आया? सबको एक साथ अपन बोलेंगे. All right. Next students, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. So I'll take you back to nucleus वाला slide. And हमने जो chloroplast and plastic छोड़ा है उस पे भी अपन रिटर्न आएंगे. Don't worry. ठीक है? I'll come back to these sections also. Don't worry. Let me complete this first. Okay. So this region over here, चलो region identify करते हैं students. This region over here is known as nucleoplasm. Nucleoplasm. Very good. This membrane is known as nuclear membrane. Correct? Nuclear membrane के बीच में जो space है, that is known as nuclear pore. Nuclear pore. Correct? How nuclear pore is formed? You will say fusion of both the membranes, the inner membrane and the outer membrane. The inner membrane and the outer membrane of nucleus will fuse. दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखो, zoom करूं मैं, ये देखो, inner membrane and outer membrane जहां जहां fuse हो जाएंगे वहां वहां क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर पोर क्रिएट हो जाएगा. क्या क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर पोर. Clear? Clear till now? Okay. Let us go a step ahead. Now, if I can see this thread-like material, students, ये thread जैसा कुछ दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे ये thread जैसा कुछ दिख रहा है? ये पूरा thread जैसा. तो ये कैसा बिखरा हुआ है? देखो. Is it in an orderly pattern? किसी order No. में है क्या? जरा भी order में नहीं. So this is your genetic material only, and इसको मैं बोलता हूँ chromatin. What do I call it? Chromatin. 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 Dispersed है. कैसे डिस्पर्स है? जैसे आपके घर में आपके सामान कैसे डिस्पर्स रहते हैं वैसे. बट अगर मैं आपको बोल दूं, इफ आई से कि अद्रिता, आई एम गोइंग टू चेंज योर रूम, एंड अगर अद्रिता के मम्मी ने बोल दिया कि अद्रिता, we have made a new room for you, so you're going to get shifted from this room into that room. So first thing that Adrita will start doing is she will start accumulating her things. वो अपने सामान को सब समेटने लगेगी, कंडेंस करने लगेंगे. क्या करने लगेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वर्ड? कंडेंस. The things which are dispersed all over the room, those all materials, every article, everything she'll start condensing, and then she'll make sure कि ये जो धागा बड़ा और ऐसे dispersed है, थोड़ी देर बाद कंडेंस फॉर्म में दिखेगा. एंड हाउ डज दैट लुक लाइक एग्जैक्टली? ये जो आप पहचानते हो इसको आप बोलते हो ना क्रोमोसोम्स. करेक्ट? ऐसे शेप में आपको दिखते हैं ना क्रोमोसोम्स. याद आ रहा है स्टूडेंट्स 10th में Yes, आपने sir. ऐसे पढ़ाई किया है. ये सारे क्रोमोसोम Yes, लाइन से sir. खड़े. ये so this is अद्रिता ने ये सारी चीजें लाइन से रख दी हैं because she knows कि now there is going to be division. Adrita and her sister,
both of them were living together in that room. So if now her mother has ordered her ki, I have prepared, we have made a new room for you, so you people have to get separated. So now I can say that, ये देखो students, ऐसे बनाता हूँ चलो. So ये जो ब्लू वाली चीजें हैं, इमेजिन करते हैं कि ये अद्रिता के सिस्टर की चीजें हैं, ठीक है, एंड देन रेड में ये सब चीजें अद्रिता को बिलोंग करती है. तो धीरे धीरे ये पूरा सेपरेशन हो जाएगा. याद रहा आपको एनाफेस, मेटाफेस, टीलोफेस? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये अभी. तो इसके पहले अगर अगर अद्रिता की मम्मी नहीं बोलती कि सेपरेशन करना है, न्यू रूम बन गया है, तो आई एम श्योर कि अद्रिता और उसकी बहन के सामान ऐसे ही रहते हैं, ऐसे डिस्पर्स्ड रहते हैं, है ना. ये कुछ भी ऐसे इकट्ठा नहीं. शी इज लाफिंग लाइक एनीथिंग. मतलब इट इज फॉर श्योर कि यही ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रखा है ना. ओके चलो, लेट अस गो स्टेप अहेड स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज डन, दिस इज डन, है ना. न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस. I'll come to this structure which is known as nucleolus. चेक करो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस कहाँ है. Check the labeling. Nucleolus, nucleoplasm, nuclear envelope includes perinuclear space. Contain, जब भी आप बोलोगे perinuclear space, immediately you should say continuous with endoplasmic reticulum, which is of two types: smooth and rough. Rough has ribosomes on its surface, helps in protein synthesis. Smooth helps in lipids and steroid hormones का synthesis. है ना, ये पूरा किस्सा वापस रिपीट कर देने का. ओके, क्रोमैटिन. Chromatin, genetic material, but non-condensed form, dispersed form. If I ask you students, I can see chromatin, I can see dispersed form में genetic material फेंक दिया गया है, बस फेंका गया है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में. Now if I ask you, is this cell under division students, or it is non-dividing right now? Is this cell dividing or non-dividing? Non-dividing. Non-dividing. Non-dividing is right answer. पलक ने सबसे पहले बोला. So why Sir, पलक why? से? हाँ, अपना आते आंसर पे. सो इफ पलक सेज कि इट इज नॉन डिवाइडिंग, दैट मींस पलक को पता है, पलक की अच्छी फ्रेंड है अद्रिता, पलक को पता है कि अद्रिता के सामान देख के तो लग रहा है कि उसके सामान सारे बिखरे हुए हैं. सो श्योरली हर मदर हैज नॉट इन्फॉर्म्ड हर अबाउट सेपरेशन, डिवीजन, शिफ्टिंग वाला काम अभी इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए सारे सामान बिखरे हुए हैं. सो सेल हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड कि यू आर गोइंग टू गेट डिवाइडेड. सो देयरफॉर सेल ने सारी चीजें ऐसे फेंक के आराम से बैठा है. अब जैसे ही मैं सेल को बोलूंगा सेल गेट रेडी, यू आर गोइंग टू गेट डिवाइडेड, तो सेल क्या बोला न्यूक्लियस को, चल न्यूक्लियस फटाफट फटाफट स्टार्ट कंडेंसिंग थिंग्स, फटाफट चीजें इकट्ठा कर, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के इकट्ठे करो, एंड वी आर अबाउट टू गेट डिवाइडेड. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Is that clear? So I Yes, cannot sir. see chromatin in this phase. I can see when condensation starts happening. ठीक है, तो आपको जब घर में आप जाओगे, अद्रिता के आप रूम में जाओगे, तो आपको दिखेगा नहीं इतने सारे सामान है इसके पास, बट जैसे उसका शिफ्टिंग स्टार्ट होता है ना, तो सामान की लाइन लग जाती है. अब बोले ये सब भी है, तो तेरे पास पहले वाली बुक है, तेरे पास 10th स्टैंडर्ड की बुक है, तेरे पास 3rd स्टैंडर्ड की बुक है, 2nd स्टैंडर्ड की बुक है, इतनी सारी बुक्स है, कहाँ छुपा रखी थी? समझो, एवरीथिंग कम्स आउट. सो सिमिलरली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, then I can see genetic material properly aligned. That we will study in detail in next chapter students. But Cell division sir, chapter में अपन पढ़ाई कर लेंगे. सर लेकिन Yes. डिवाइड तो होगा ही ना, फिर तो नॉन डिवाइडिंग कैसे होगा? ये स्टेज में नॉन नहीं 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 नहीं. डिवाइडिंग है. हाँ, ऐसे नहीं अपन बोल रहे कि सेल डिवाइड नहीं होने वाला. We are not saying that this cell is not going to divide. But this stage over here, where nucleus में genetic material are in non-condensed form, they are in dispersed form. So this means that this cell is right now it is not dividing. When this cell is about to divide, things will start condensing. Genetic material will start condensing. It will form sister chromatids. Poles पे arrange हो जाएंगे. Then anaphase, metaphase, सब कुछ सारे phases आ जाएंगे वहां पे. Is that clear? यस सर. Okay, चलो आगे चलते हैं students. Let us go ahead. Let us go ahead. Okay, so after nucleus, where do I go? I go to the next part. I go to the next part, which is chromatin. So this is where you have to understand the concept, students. Right now, जो हमको दिख रहा था, ये देखो, ये जो हमको दिख रहा था, ऐसे कुछ. You were looking at this structure, students. Chromatin. ये देखो, you were looking at this structure right now in the previous slide. This is what, this was what you were seeing in the previous slide.
chromatin. Can you see chromatin, students? Now, as soon as I order this cell, cell you are going to get divided. So, फटाफट इकट्ठे हो जाओ, सारे genetic material condense कर लो. So, chromatin will start arranging itself, and this is what gets formed. So, I start observing genetic material, that is chromosomes, in this pattern now. Understood? Okay, so when I can see chromosome in this pattern, in this shape, in this kind of arrangement, I'm very sure that cell division is going to happen. Now cell is ready to get divided. Now cell is definitely getting ready to get divided. If genetic material is in this pattern, ये देखो ये dispersed, कोई tension नहीं है, यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं. So cell is divided. अभी फिलहाल cell is not dividing. Understood, students? Understood? If I want to understand कि इसके अंदर क्या है, so let us zoom inside this. So if zoom inside this, this is what I get to understand. So let me make you understand this concept now. So I'll zoom out a bit and आ जाते हैं यहाँ पे. Let us understand first, and then we will go back to this diagram. Okay, students, let us understand first, and then we'll go back to this diagram. Just a second. Okay. So first let me draw. ये देखो simple सी बात है. मैंने last lecture में भी I had taken this example while I was explaining the same concept last time. Again same example I'll take. Okay, which is that example, students? When we are flying kite, है ना? सबने kite उड़ाया ना? Kite या देखा तो है उड़ाते हुए. So हमको पता है कि एक लड़का काइट उड़ाता रहेगा या एक लड़की काइट उड़ाती रहेगी, एंड बाजू में उसका फ्रेंड क्या हेल्प करता है, उसका फ्रेंड का क्या काम है, जिसको काइट उड़ाने नहीं आता. वेरी गुड, फिरकी पकड़ना, है ना? तो ऐसे फिरकी पकड़ के अपन खड़े रहेंगे, फिरकी पकड़ के हम खड़े रहेंगे, है ना? ये हो गया मेरा ऐसे ऐसे बड़ा सा ये स्ट्रक्चर, दिस इज फिरकी, है ना? इसके अराउंड क्या रहता है स्टूडेंट्स? इस पे क्या रहता है? फिरकी खाली रहता है क्या? क्या रहता है इसके ऊपर? मांझा. क्या बात है कुलजीत, वेरी गुड. मांझा. तो ये मांझा ऐसे घुमा के रखते हैं हम लोग, ऐसे इसके ऊपर रहता है, राइट है? लाइक दिस. So what is the reason of using this wooden material या प्लास्टिक का चीज जो हम यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहे हैं? Any reason? Why can't I keep this manja like this only? Very good. Entangle ना हो जाए, फंस ना जाए रस्सी, है ना? Waste ना हो जाए. It should have something around which it is coiled properly so that it can be used later on. है ना? तो सेम कंसेप्ट डीएनए में भी अपन ने अप्लाई कर दिया. जब हमको समझा कि पतंग के साथ भी ये फॉर्मूला हिट है, तो हमने डीएनए पे भी इसको अप्लाई कर दिया. क्या किया पता है हमने डीएनए को? डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल. सो अगर डीएनए कॉइल होके इंटैंगल्ड हो गया तो मैं क्या करूंगा? देयरफॉर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, व्हाट आई डिड इज आई टुक समथिंग लाइक दिस ऑक्टामर. ठीक है, हिस्टोन के ऑक्टामर कैसे होते हैं वो? वेट, ऐसा कुछ, ये देखो पेपर बेट मैंने लिया. ठीक है, ओके. सो दिस is 1. इस तरह से स्टूडेंट्स 8. If I take 8 such proteins, 8 proteins, ऐसा कुछ दिखेगा. ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4. वो जो क्यूब्स होते हैं ना, ठीक है, अपन खेलते हैं ना रूबिक क्यूब्स, वैसे. सो 4 आगे एंड 4 इसके पीछे. सो दिस इज 1. सिमिलरली 1 यहाँ पे, देन नीचे एक 1, नीचे एक 1, टोटल 4. इनके पीछे भी 4. सो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 आगे 4 पीछे. हाउ मेनी प्रोटीन्स टोटल? 8 over here, and behind them I'll have 4 more. So 1 2 3 4, and behind them I have 4 more proteins. 4 more proteins. 4 more histone proteins. 4 more histone proteins. Am I clear? इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स. हाउ डू आई इंडिकेट देम? H1, H2, ठीक है, ऐसे इनके नाम लेते हैं. H2A, H2B, ये सारे टाइप्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के. These are all types of histone proteins. All right, students. So I have how many types of histone proteins in this 8 structures? 4 front side, 4 back side. So this is known as octamer. This is known as octamer. Which octamer? Histone octamer. Which octamer, students? Histone octamer. Is this understood?
Is this understood? Yes, sir. Everyone, Yes, keep your sir. camera on. Sakshi, Dev Shah, Nidhi Mehta, keep your camera on. Histone octamer and histone proteins ही होते हैं students. अगर आप पूछिए सर क्या nature है इनका, they are proteins. Okay, so I have histone octamer over here. Now around histone octamer I'm going to rotate DNA. ठीक है, so DNA का I have this charger मेरे पास है, तो I'll use that charger just to make you understand कि कैसे होने वाला. ठीक है, okay. Okay, let me imagine कि this is my octamer. Okay, students, octamer ready है. ठीक है, suppose this is my DNA now. So I'll take this DNA molecule. ऐसे octamer के around I'll coil it. 1 ton हो गया. 1 ton complete हुआ students. Then 3/4. Second ton पूरा नहीं हुआ. First ton पूरा हुआ. ये देखो. I'll start from this point. Okay, this point I'll start. So 1 1/3/4. That's it. That will leave. ये DNA निकला बाहर. ठीक है. Now यहाँ पे वापस it will get second octamer. ये देखो students. Suppose I have second octamer over here. ठीक है, second octamer over here. तो अभी इसको मैं भूल जाता हूँ. ये यहाँ पे suppose है, imagine करो. Then second octamer के around 1 पूरा 1 होगा and then 3/4. Then again आगे चलेगा DNA. So इस हिसाब से in this pattern students, can I imagine I'll get something like this. ये देखो, something like this I'll get. ये देखो students, I have an octamer over here. Suppose this is an octamer. I can see only front side proteins. Okay, then I have maybe octamer over here. Then octamer over here. I'll keep my octamers ready. ठीक है? I'll keep my octamers ready. चलो, octamers ready कर लेते हैं अपन. Now I'll take my DNA thread. Okay, suppose DNA अपन ने ले लिया. So now you are going to understand ki how exactly DNA is arranged inside the nucleus students. How your DNA is arranged inside the nucleus. How it is stored over there. कैसे करेंगे अपन DNA को? We are going to coil DNA around your octamer. But how many rounds? बताओ मुझे कितने rounds? 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds? Hmm. How many rounds? 1/3/4 is right answer, Rebecca. 1/3/4. 1/3/4 is right answer. Very good. So 1, let us start over here. ठीक है, ये देखो यहाँ से start करता हूँ मैं. 1, then 3/4 and यहाँ आ गए. फिर वापस से 1/3/4, 1/3/4, 1/3/4. समझे, ऐसे बाहर जाएगा. Understood? So this is how coiling happens. And students, this point over here, ये देखो, this length, अभी यहाँ पे तो proportionately I have drawn, but यहाँ पे I have drawn proportionately. But this area over here, the distance between one histone octamer and the other. अच्छा, चलो इसको मैं पहले define कर देता हूँ, what it is called. Okay, students. Now this structure over here, octamer plus DNA. Okay, octamer plus DNA. This structure, students, this structure, octamer plus DNA. This structure is known as nucleosome. This structure is known as nucleosome. So what is nucleosome? Octamer, histone octamer plus 1/3/4 part of DNA. Well, DNA का 1/3/4 नहीं, but the section of DNA. समझ में आ गया? That is nucleosome. So how many nucleosomes do I have on this screen, students? How many nucleosomes do I have on this screen? 4 is right answer. 4 is right answer. This is first nucleosome, then this is one nucleosome, then this is one nucleosome, then this is one nucleosome. Am I correct over here, students? Is this understood? Is this understood? Okay, now very, very important point. Very, very important point, students. This section between nucleosomes, the DNA, that part of DNA which is between two nucleosomes. Which is that part? Check karo, laser check karo, students. Can I say this is the part of DNA which is between two nucleosomes? Then this is the part of DNA between two nucleosomes. Then this is the part of DNA between two nucleosomes. Do you all agree? Do you all agree? Do you all agree with me, students? Yes. क्लियर है ना? ये क्लियर है? शाबाश, Yes, sir. शाबाश. So मैं इसके लिए एक टर्म यूज करने वाला हूँ, students. I'm going to use a term for this because
आई एम सीइंग एट रेगुलर इंटरवल्स, ध्यान देना, रेगुलर इंटरवल, ऐसे नहीं कि इसका डिस्टेंस है सपोज 5 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर, देन मेरी मर्जी 7 सेंटीमीटर, देन होगा 9 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक डिस्टेंस है वो, रेगुलर इंटरवल, दैट मीन्स फिक्स्ड डिस्टेंस है. So what is that fixed distance? That part of DNA को क्या बोलते हैं हम students? That DNA which is present between two nucleosome, which is linking the two nucleosomes is known as linker DNA. It is known as linker DNA. So can I write like this? ये देखो students, can I say this is linker DNA? This is linker DNA. Can I say this is linker DNA? Yes, sir. Can I say this is linker DNA? Correct है? Correct है students? Okay. Yes, sir. Now ये diagram में आ जाओ, देखो diagram में आ जाओ. Diagram में आ जाओ students. Can I say this is linker DNA? Check करो diagram में arrow draw किया मैंने, है ना? Correct बात है? Can you make out histone octamer in the diagram students? Should I zoom it a bit? ये देखो zoom करूं, ये देखो, can you make out histone octamer over here? Histone Yes, sir. octamer, yellow colored Yes, sir. structure. Yellow color. Yes, very good. So yellow color के around दिख रहा है घुमा हुआ है DNA strand. So चलो define करना मेरे लिए, ठीक है? Please define this structure for me students. What can I call this structure over here? What is the name of this structure? Nucleosome. Shabash. Well done, Srushti Panchal. Nucleosome. It is known as nucleosome. Nucleosome. Correct, students? Next, please define this structure for me. ये कौन सा DNA है? Linker DNA. Linker DNA. Linker DNA. Keep on taking screenshots if you can, students. Keep on taking screenshots. This is linker DNA. This is linker DNA. Okay, and if you, or else I've already sent this to you in the group. This PPT I've already sent. So if you want, you can just write it down in your book and later on you can make it a fair notes. Okay. चलो लिंकर डीएनए हो गया. Now मुझे पलक ने पूछा, sir, you have marked this as linker DNA and you have labeled this entire structure as nucleosome. Entire structure is nucleosome. It is made up of histone octamer. So can we have an exclusive term? Can we have a term for the DNA, for the specifically that DNA which is present on octamer? समझा? ये जो डीएनए जो ऑक्टामर के ऊपर है, जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, उसको आपने बोल दिया लिंकर डीएनए, है ना? बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स यू हैव लेबल्ड इट एज लिंकर डीएनए. What about the part of DNA? Is there any name for this DNA? This part of DNA which is around octamer? Can we have any name for this? Do we have any term for this DNA? This DNA which is around histone octamer. Are you getting me? अपन किस DNA की बात कर रहे हैं? DNA का Yes, sir. that part which is around histone octamer, उसको तो अपन ने नाम ही नहीं दिया, हमने पूरे स्ट्रक्चर को बोल दिया न्यूक्लियोसोम. Yes, nucleosome. And nucleosome is formed up of DNA